there are chief ministers, and adequate arrangements should be made to ensure that there is no slip up on the security for the dignitaries who are traveling to Kartarpur using Kartarpur Corridor. On the security and protocol arrangements, Reza, we have been sensitizing them. We have, in fact, on the ASR as well, we have again requested them that, since these are prominent dignitaries and it is very, in terms of proper mechanism, I think it is very natural for an advanced team to visit a country before a high dignitary visit takes place. We have not heard anything from the Pakistani side so far. But again, we have requested the Pakistani side that, proper arrangements, both for security, for protocol, and also for medical arrangements for the dignitaries who are traveling as part of the inaugural Jatha should be made. On anything else? Did I miss out? मैं ये इतना बता सकता हूँ कि एक दो सवाल का मैं हिंदी में आंसर दे देता हूँ, पासपोर्ट वाला, कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग हैं. कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए. फॉरेन ऑफिस और दूसरे एजेंसीज के बीच में भी हमें लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है. फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक MOU है. उस MOU को अभी बदला नहीं गया है और MOU यूनिलैटरली बदला भी नहीं जा सकता है. तो फिलहाल स्थिति यह है कि उस MOU में लिखा गया है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. आपने देखा भी होगा, ये जो हमने ये प्रेस रिलीज इशू किया था उसमें लिखा है पिलग्रिम्स नीड टू कैरी ओनली अ वैलिड पासपोर्ट, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू कैरी OCI कार्ड. सो वी अभी फिलहाल जो है हम इसी बेसिस पे जा रहे हैं कि जो भी पिलग्रिम्स इस जर्नी को करना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट साथ लेके जाएं. एक तो ये, दूसरा कि पाकिस्तान को 4 दिन पहले जो लिस्ट है उसकी कंफर्मेशन देनी चाहिए थी, अभी तक वो उन्होंने दी नहीं है. हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी लिस्ट हमने उनके साथ शेयर की है उसमें जितने नाम हैं वो सब पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिए हैं और उन सारे लोगों को हमने बता दिया है कि आप अपनी जर्नी की तैयारी कीजिए. और कौन सा बोलता इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि बायो एग्जैक्टली, क्योंकि ये मैंने देखा है कि हमारे एग्जिस्टिंग MOU में वो है नहीं. तो अब वहाँ पर जो जर्नी होगा उसमें किस ढंग से क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें देखना होगा और अगर प्रोविजन ऑफ द MOU में होगा तो हम उसको करेंगे उसको. जी, उमाशंकर. एक तो नवजोत सिंह सिद्धू को आपने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दिया और दूसरा वो अब जत्थे के तौर पे जाना चाहते हैं तो लिस्ट में नाम भी नहीं है उनका. तो वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे अगर जत्थे में वो जाके वहाँ खड़े हो जाएं? और कोई है, कोई दूसरा सवाल इस पर? विनीता, और कोई? वही सवाल है. नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इनॉग्रल इवेंट हो रहा है 9th को, ये बहुत हिस्टोरिक इवेंट है और पिछले 20 साल से हमारी कोशिश थी कि हम इस चीज़ पर अमल करें. हमने पाकिस्तान से लगातार बातचीत करती रही कि इस कॉरिडोर को तैयार किया जाए. तो मुझे लगता है कि जो इवेंट 9th का वो बहुत बड़ा इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट है. अब उसमें किसी एक इंडिविजुअल को हाईलाइट करना, मुझे नहीं लगता है कि वो उस पूरे इवेंट को जस्टिस देना है. जहाँ तक किसी के जाने न जाने का सवाल है और स्पेसिफिक जो उनका ट्रैवल प्लान है किसी इंडिविजुअल्स का, उसमें फ्रैंकली मुझे नहीं लगता है कि जो ओकेजन का महत्व को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये होगा सही कि हम एक एक इंडिविजुअल्स के बारे में बताएं कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है. ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इतने सालों से, इतने दशकों से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के पिलग्रिम्स थे, वो इनका एक ड्रीम था कि वो पैदल चल के बिना वीज़ा के उस गुरुद्वारा पे जा सके और वो उनका जो ड्रीम है वो रियलाइज़ होने वाला है. जहाँ तक किसी इंडिविजुअल के जाने का सवाल है उसके बारे में सबको पता है कि प्रोसेस क्या है और वो प्रोसेस ये है कि एक वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उन्होंने लॉन्च की है. उस वेबसाइट पे उनको रजिस्टर करना होता है और कुछ चीज़ें उनको सबमिट करनी पड़ती है और उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बेसिस पे जा सकते हैं. तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ओकेजन है, इतना बड़ा ओकेजन है, उसमें इंडिविजुअल्स
कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो इनॉग्रल जत्था है उसके बारे में भी हमने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है, क्योंकि ये एक मैटर ऑफ फेथ है, मैटर ऑफ सेंटिमेंट है, और उसमें इंडिविजुअल्स को हाईलाइट करना मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे इंडियन डेलीगेशन के लीडर हैं वो एक रिलीजियस लीडर हैं, ज्ञानी हरमीत सिंह जी हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब हैं, उनके जो जत्थेदार हैं। यस प्लीज। Ravi, I have the two questions regarding what is the official comment from the government of India on the protest and outrage going in Nepal against the new political map released on the 2nd November? The number one. And the second one is the government of Nepal came up with the official statement yesterday outrightly rejecting that the map which included the Kalapani area and they claimed that the Nepal is an integral part of the Nepal and it has been claiming for this many years. What is the official instance of comment from the government of Indian side? Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised our boundary with Nepal. The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close and friendly bilateral relationship. At the same time, and I think this is very important to note, that both sides should guard against vested interests who are out there to create some differences between the two countries. Ravish, yesterday the Finnish foreign minister in interviews to the Hindu and Times of India said that the MEP delegation that visited Kashmir was not representative enough, did not have the political expertise, and he actually argued that UN diplomats and observers should be allowed in, given that Finland has the EU presidency at the moment. Your comments, please. Smita, on MEP, I think I have clarified our position, in the last briefing, perhaps. On the visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir, our position. Our leaders have spoken about it, and I have also spoken that we have to look into the intent of the visit, the context, and also the ground situation. And I think these are the factors which has to be taken into account before any decision on the visit by anybody to the UT of Jammu and Kashmir can be considered. Yeah, Amity. Hi. After the RCEP Leaders Summit on Monday, the MEA very categorically said that India had exited the RCEP. But subsequently, other RCEP members, including New Zealand, China, and also Japan, they've said that 15 countries have actually agreed to work with India on its sensitivities and hope to resolve them so that all can sign the agreement together. And the joint statement which was issued after the leaders meeting, it also talks about, a decision being taken by India based on the success of the talks on sensitivities. So, what exactly is India's position on RCEP? Frankly, there is nothing new. Our position has been very clearly articulated in the briefing which was done by Secretary East in Bangkok. I can only share with you that our concerns and requests on this matter, they are available with the other 15 members of the RCEP. You are aware, and we have shared, that we have negotiated with a very clear-eyed views of our interest. We negotiated hard. If we get a firm indication that our core interests will be accommodated, at that stage, we can think of taking any further decision in this matter. Sinjoy. Sir, you mentioned this before, but there's new information that is coming in of a large number of Chinese technicians and engineers working on the China-Pakistan economic corridor.
In fact, at just one factory, the Pakistan Aeronautical Complex, there are over 300 Chinese nationals. Also, sir, on the 23rd of September, there was a meeting in Beijing between Chinese and Pakistani officials, where, keeping in mind the security situation, the Chinese have offered to take more steps, including security measures and smart measures. Since this is Indian territory, how does the government react to it? No, Srinjo, our views on BRI, and CPEC is a very important component of BRI, has been very consistent. You know, I mean, after we came out of that statement 2 years ago, I mean, we have maintained that position, number one. Number two, our position on the Pak-occupied Kashmir is also very well known. We consider that it is an inalienable part of India. So if you look at these two statements from our side, you know, which is very clear, you know what we are talking about. We feel that any project or any activity in the disputed, in the territory, you know, in the Pakistan occupied territory, which we say that it belongs to us, we have conveyed our concerns in the past. On the meeting between you know, Chinese and Pakistanis, frankly, I have no comment at this point of time. You know, if it relates to, but yes, I think on CP itself, on BRI, I think our position has been clear. We have articulated in the past. It remains the same. Yeah. Sir, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जब दोनों देशों के रिश्ते तनाव में थे, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी बदली हैं और अब ये करतारपुर का शुरू हो। डिमांड जो रहा है वो बहुत ही क्लियर है। हमने उस डिमांड में कभी नहीं कहा है कि आप पाकिस्तान ये करतारपुर कॉरिडोर को चालू करें। हमारा डिमांड रहा है कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो आपने एक्शन लेना चाहिए, जो क्रेडिबल वेरीफाइबल एक्शन लेना चाहिए, वो आपको हमें दिखाना पड़ेगा। तो जो आप बता रहे हैं कि हमारी बातचीत होगी या नहीं होगी, वो इसलिए नहीं हो सकती कि जिस मामले पर अभी मामला अटका हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान को हमें दिखाना पड़ेगा कि उनके देश में और ये उनके जो टेरिटरी हैं, जो जिसके वो कंट्रोल में हैं, वहाँ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है और फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये करतारपुर कॉरिडोर तो दूसरा है, इसको इससे लिंक करके नहीं देखा जाए। सर, मेरा एक सवाल है, एक बॉलीवुड की मूवी आ रही है पानीपत, उसको लेकर जो है अब विवाद हो रहा है। जो अफगानिस्तान एम्बेसी ने किसी तरीके का कंसर्न रेज किया है और वो चाहते हैं कि INV मिनिस्टर से मुलाकात की, इसके बारे में कोई जानकारी अगर आप क्या सीरियसली ये सोच रहे हैं कि मैं बॉलीवुड फिल्म के बारे में कमेंट दूं? देखिए, बॉलीवुड फिल्म है, उनकी स्क्रिप्ट होती है और पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कोई हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है, पहले भी बनते आए हैं। और अब इसके बारे में वो क्या डिपेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम्स हैं, सेंसर बोर्ड है, उनसे क्लियर होता है। और जो आप देखते हैं बॉलीवुड फिल्म में, अगर आप उसको सच्चाई मान के चलने लगे तो बहुत मुश्किल बात होगी। उसमें बहुत चीज़ें दिखाया जाता है। तो बॉलीवुड फिल्म में क्या आता है, नहीं आता है, क्या कहानी है, नहीं है, उसका उन्होंने क्या डिस्क्लेमर दिया है, नहीं दिया है, वो अब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बट फिल्म को फिल्म ही रहने दीजिए, उसको मेरे ख्याल से तथ्य से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कलोल। Sir, is the government considering cancelling the OCI card of author Atish Taseer in response to an article he wrote for the Time magazine? It's being reported right now. No, I'm actually confused. I mean, how do you scrutinize an OCI card? How do you scrutinize? I mean, you apply for an OCI card, and if there are certain conditions which you fulfill, and there are certain documents which you have to submit. If you have submitted those documents, then you are eligible for an OCI card. But yes, I mean, there are certain conditions under which an OCI card is liable to be cancelled. Now, I again can't comment, and I have said in the past that for us to comment on individual cases of OCI and passport, so and so has not got a passport, this individual has not got an OCI, is not possible. But yes, within the principles of how an OCI card should be issued or can be cancelled, if it relates to that, if it fits into that category, then action will be taken. But to put it very briefly, I am not aware about this specific case.
and I am also not sure as to how the scrutiny of an OCI card is done. Either you issue it, and if it is issued, and if you find that he is not eligible, no longer eligible, and if it fits into a certain criteria of cancellation of an OCI card, then the OCI card will be cancelled. Sir, my question is related with Kartarpur Corridor. How people will pay this $20 fees? What is the mechanism about this? And who will collect the fees? No, ये तो आप जाएंगे जब आप रजिस्टर करेंगे और वहीं पर सारी all the details of how the entire journey is to be conducted is available on the website which has been launched by the Ministry of Home Affairs. People who are undertaking the journey, they are aware. It is just that they have to carry this amount with them, and the payment has to be made. खालिस्तानी ऐप्स हैं जो चल रहे हैं फरवरी 2019 से चल रहे हैं, क्या इसको लेकर के कोई MEA ने गूगल से या कुछ बातचीत की है? मेरी जानकारी में नहीं है कि हमने बात की है, बट जब भी हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं जो ऐसे तथ्यों को और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, तो समय समय पर हमने इस मैटर को टेकअप किया है। वो बहुत बड़ा ओकेजन है और इसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करना और वो कैसे जा सकते हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा सकते, कैसे जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस फोरम से मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। किसी एक शख्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मान लीजिए कोई भी शख्स है जिसका नाम फिलहाल उस लिस्ट में नहीं है, क्या वो उस पे जा सकता है? नहीं, तो ये तो बात क्लियर है कि देखिए जो 9th को जिसको जाना है उसका नाम तो जो इनॉग्रल लिस्ट हमने भेजी थी, जो जत्था में जा रहे हैं, वो हमने पाकिस्तान को भेजी है। अब हमने कहा कि जिसका पाकिस्तान को चूंकि जवाब नहीं आया है, हम मान रहे हैं कि जो उसमें 570, 600 जो नाम है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे नाम पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ओके कर दिया है उन लोगों को, और जो जा रहे हैं उनको पता है कि कौन कौन है उसमें। हमने उन सब लोगों को बता दिया है कि आप उसके लिए तैयारी करें और जा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो MOU है, ये काफ़ी मीटिंग्स के बाद, नेगोशिएशन के बाद ये एग्री हुआ है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता है कि अपनी तरफ से वो बोलें कि अब ये हमने बदल दिया, वो बदल दिया। और ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 10 दिन 15 दिन हुए हैं साइन किए हुए, यही सब चीज़ें उनको करना तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? ये जो पोस्चरिंग है, और यही मुझे हमेशा डाउट होता है कि ये पोस्चरिंग क्यों करते हैं। अगर यही उनकी सीरियसनेस थी, अगर यही उनका था कि हमें सबको फैसिलिटेट करना है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये एग्जैक्टली जिस समय नेगोशिएशन हो रहा था उस समय कर सकते थे। बट ये बार बार ये आफ्टर थॉट आना कि अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वीज़ा फी नहीं लेंगे, तो ये लास्ट मोमेंट में अपने आप को दिखाना कि हमने इतना बड़ा कंसेशन किया है, ये कंफ्यूजन क्रिएट पैदा कर रहा है। Mike. A clarification on the same thing, because in the second letter, at least of what I've seen of Najot Sidhu's, he said either on the 9th of November with the Jatha or 8th of November via Vaga, I'm awaiting a visa, which he got eventually. So he has a visa on the 8th of November, minus the political clearance. If he tries to cross over, what happens? What is the repercussion? It's speculative. You see, I think, let me kind of just explain. I mean, there are different categories of people who require different categories of clearances. And it all depends on whether you are going for an official visit or a private visit. Now, depending on that, a certain clearance is required. Now, people who are undertaking the journey, they should be aware as to what kind of journey this constitutes. And accordingly, they have to proceed. I think I will not take any other question on this. Anything else? The Pakistani side, the government there first tweeting a video on Twitter, then on Facebook of Bhindranwala. Any reaction? Are you concerned that Pakistan might be using the corridor for its own nefarious purposes? No concern. I think we condemn Pakistan's attempt to undermine the spirit under which the pilgrimage is supposed to be undertaken. We have lodged a strong protest with the Pakistani side on this matter.
From the beginning, we have gone ahead with this entire initiative with a very open mind, with very constructively, very enthusiastically, because we realized that it involved the sentiments of the Sikh community and also the other members of members of other religion. It involved matters of faith. We have been assured repeatedly by the Pakistani side during our discussions that they will not allow any anti-India elements, anti-India propaganda during the pilgrimage, during the event. They should now stick to the spirit under which we have agreed to all this, under the spirit under which this pilgrimage is being undertaken. And we also demand that they should remove the objectionable video and also some printed material which is being circulated, promoting anti-India propaganda. Good. Thank you. This concludes the weekly press briefing. I'll be back very shortly with Secretary ER and ASMER to brief you on Prime Minister's visit to Brazil for the BRICS Summit.